Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Maharaj. Please accept our humble obeisances, Maharaj. And it is our great fortune, Prabhu, of Kanaya Desh devotees today on a very auspicious Nityananda Trayodashi day. Maharaj, we are getting your divine association, Maharaj. So we are so grateful of you, Maharaj, giving your precious time to us, to enlighten us and to bless us. So we feel ourselves so fortunate, Maharaj, and we are blessed. So Maharaj, can I give you a small introduction to devotees, Maharaj? Okay, Prabhu, yes. Hare Krishna. So we welcome all the devotees. हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और ये हम सब का परम सौभाग्य है। आज हम सब लोगों के साथ में परम पूजनीय भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज वो हमारे साथ में उपस्थित हैं और इस बहुत ही शुभ जो त्योहार है हम गौड़िया वैष्णवों के लिए, तो नित्यानंद त्रयोदशी, उसमें आज हमको महाराज का आशीर्वाद और महाराज के मुख कमल से हमको कथा का श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं महाराज का एक संक्षिप्त परिचय दे करके और फिर हम लोग महाराज से अनुरोध करेंगे कि महाराज हमको उनकी कथा के माध्यम से कृपा प्रदान करेंगे। सो His Holiness Bhakti Vigna Vinas Narasima Maharaj, Maharaj was initiated by Srila Prabhupada in London in 1971. So Maharaj को Srila Prabhupada के द्वारा सन
1971 में लंदन शहर में दीक्षा प्राप्त हुई। A year later he received second initiation, और एक वर्ष के बाद में महाराज को द्वितीय जो दीक्षा होती है हमारी संस्था में, वो महाराज को श्रील प्रभुपाद द्वारा प्राप्त हुई। He has been preaching for over last 25 years in Asian countries such as India, Philippines, China, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia and Thailand. So महाराज 25 वर्षों से अधिक समय से विशेष रूप से जो एशिया के जो देश हैं जिसमें भारतवर्ष है, फिलीपीन है, चाइना है, ताइवान है, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, तो उसमें महाराज प्रचार कर रहे हैं। Though his years of preaching, he has given countless souls practical guidance and deep inspiration. तो इतने वर्षों through his years of preaching, so इतने वर्षों के जो महाराज का ये प्रचार की जो कृपा है उसके माध्यम से महाराज ने कई ऐसे जो बद्ध जीव हैं उन पे कृपा प्रदान की है। Taking sannyas in Mayapur in 1994 from Tamal Krishna Goswami Maharaj did not mean much of a change in his lifestyle. तो सन 1994 में महाराज को परम पूजनीय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई, लेकिन महाराज के जीवन में कोई अधिक परिवर्तन नहीं था। उनका जो जीवनचर्या थी वो एक सन्यासी के ही जैसे पहले से थी। तो सिंस महाराज हैज ऑलवेज बीन स्ट्रिक्ट इन साधना, क्योंकि वो अपनी साधना हमेशा से उसको बहुत दृढ़ता पूर्वक करते हैं। Whoever gets to know Maharaj admires and respects his sincere and faithful practice of chanting the holy names of the Lord. So जो जिस किसी का भी महाराज से संग होता है, जो कोई भी महाराज के संपर्क में आता है उनकी कृपा के, तो वो सब महाराज का जो उनकी साधना है, उनका जो जप करने के प्रति महाराज का जो भाव है, वो सभी उससे आकर्षित होते हैं। और he truly walks his talk. So महाराज जो बोलते हैं उसके अनुसार ही उनके जीवन में वो पूर्ण रूप से उनके जीवन में भी वो दिखाई देता है। जो महाराज बोलते हैं, जैसा वो शिक्षा देते हैं, वो सारी शिक्षाएं महाराज के जीवन में हमको दिखाई देती हैं। महाराज has been teaching with the MI since its inception. तो महाराज जो मायापुर इंस्टीट्यूट में कोर्सेज होते हैं भक्ति से संबंधित अलग अलग कोर्स, तो उसमें जब से वो जो संस्थान है उसके वो प्रारंभ हुआ है, तब से महाराज उसमें अपनी जो सेवाएं हैं, शिक्षाएं हैं, उससे सभी जो भक्त वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको महाराज की कृपा प्राप्त हो रही है। तो हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको महाराज का संग इतने शुभ अवसर पर मिल रहा है। तो अभी मैं महाराज से अनुरोध करूंगा कि महाराज हमको कथा के माध्यम से कृपा प्रदान करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू महाराज, आई गिव द नाउ Om Jnanatimandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today is the auspicious day of the appearance of Lord Nityananda, who is the expansion of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Panchatattva, non-different from Lord Balaram.
आज नित्यानंद प्रभु उनका आविर्भाव दिवस है और जो भगवान चैतन्य है उनकी लीलाओं में उनसे अभिन्न है और वो बलराम जी का विस्तार है। Thakur has described for us the glory of Lord Nityananda. He says, Heno Nitai Bine Bai Radha Krishna Paite Nai. Meaning, of Lord Nityananda will never be able to understand the pastimes of Radha and Krishna. तो ये एक भजन में बताया गया है कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम लोग जो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की जो लीलाएं हैं उनको कभी भी समझ नहीं पाएंगे। Lord Nityananda, non-different from Balaram, is the original spiritual master, and he comes in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu to show us the mood of service. तो नित्यानंद प्रभु वो भगवान बलराम उनसे अभिन्न है और भगवान चैतन्य की लीलाओं में वो जो आदि गुरु हैं उसके रूप में हमको शिक्षा देने के लिए आते हैं। Lord Balaram expands himself first as Sankashan, and then from Sankashan, then we have the three Purusha avatars, Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu, Shiradakashai Vishnu, and also Ananta Shesha. They're all expansions from Lord Balaram, who is not different from Lord Nityananda. तो भगवान बलराम वो अपना विस्तार संकर्षण के रूप में करते हैं, जिनसे फिर तीन पुरुषावतार आते हैं और अनंत शेष भी आते हैं, और जो भगवान बलराम उनसे अभिन्न है और नित्यानंद प्रभु उन्हीं का अभिन्न विस्तार है। We know the three Purusha avatars, Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu, Shirodakashai Vishnu, they're all involved in the creation of the material manifestation. जो तीन पुरुषावतार हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो वो इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि का कारण है। Ananta Shesha, he takes 9 different forms, all for the service of Lord Krishna. भगवान अनंत शेष वो 9 विभिन्न रूप विस्तार करते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। The umbrella over the head of the Lord, the shoes of the Lord, the seat of the Lord, the cushion of the Lord, the pillow of the Lord, the Brahman thread of the Lord, the ornaments and clothes of the Lord, they're all Ananta Shesha, expansions of Ananta Shesha for the service of the Supreme Lord. भगवान श्री कृष्ण के जितने भी जो उनके व्यक्तिगत जो वस्तुएं हैं जिनको भगवान धारण करते हैं, जैसे उनका छाता है, उनके पादुका है, उनका जो आसन है, उनका जो तकिया है, या उनका जो जनेऊ है, उनके जो आभूषण हैं, वस्त्र हैं, ये सभी भगवान अनंत शेष उनके विस्तार। So before we speak about the Leela of Lord Nityananda, we want to understand the nature of Lord Nityananda. And his nature is to be the servant of Lord Chaitanya. भगवान नित्यानंद उनकी लीला में प्रवेश करने के पहले हमको उनका जो भाव है उसको समझना है, और उनका जो भाव है वो भगवान चैतन्य के सेवक के रूप में है। Lord Chaitanya and Lord Nityananda
are non-different, just as Krishna and Balaram are non-different. Lord Chaitanya and Lord Nityananda are not different. But just as Lord Balaram was always in the mood of giving service to Lord Krishna, in the same way, Lord Nityananda is always in the mood of serving Lord Chaitanya. तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान बलराम वो दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, उसी प्रकार भगवान चैतन्य की लीला में भगवान चैतन्य एवं नित्यानंद दोनों वो भी अभिन्न हैं। और जिस प्रकार से जो बलराम जी का सेवा भाव है भगवान श्री कृष्ण की लीला में, वही भाव नित्यानंद प्रभु का भी। And just as Lord Balaram appeared first before Lord Krishna, in the same way Lord Nityananda appeared before Chaitanya Mahaprabhu. But Lord Nityananda, he appeared in Eka Chakra. He did not appear in Mayapur, he appeared in Eka Chakra. जिस प्रकार से भगवान बलराम लीला में उनका आविर्भाव भगवान श्री कृष्ण से पहले होता है, उसी प्रकार से भगवान जो नित्यानंद प्रभु हैं उनका भी आविर्भाव चैतन्य लीला में भगवान चैतन्य से पहले होता है, लेकिन वो उनका जो प्राकट्य है वो श्रीधाम मायापुर में नहीं होकर के वो एक चक्र जो ग्राम है वहां पर हुआ। So we may wonder that the Lord should appear in a holy place. Is Eka Chakra a holy place? Because usually holy places, they should be beside the Ganga, beside the banks of the holy river. But Eka Chakra is not beside any river. It's in a place called Radhadesh, which is quite dry. No, there's no river there. तो ये देखा जाता है कि भगवान यदि हम लोग ऐसे देखें तो भगवान का जो आविर्भाव है वो जैसे नित्यानंद प्रभु उनका एक चक्र धाम में हुआ, तो ये तो किसी जो पुण्य जो नदी है तो उसके समीप नहीं हुआ, ये तो राधा देश है जहाँ पर कोई जो नदी है वो नहीं है। तो कैसे हम लोग इसको समझें कि जो एक चक्र है क्या वो धाम का स्थान है? हरे कृष्णा ब्रजवास प्रभु जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसके आगे आप कंटिन्यू करिए प्रभु, जो ट्रांसलेशन है। I request ब्रजवास प्रभु जी to continue please प्रभु। Okay प्रभु। महाराज प्लीज एक्सप्लेन humble obeisances महाराज। तुम्हें प्रणाम महाराज। Hare Krishna Prabhu. So we should understand Eka Chakra Dham. Eka Chakra is a holy place because any place where the Pandavas stayed, that is a holy place. And 5,000 years ago, the Pandavas had come to Eka Chakra and they'd stayed there. तो एक चक्र जो है जहाँ पर भी पांडव और हैं वो निश्चित रूप से वो एक पवित्र स्थान है, तो इसलिए हमें समझना होगा कि एक चक्र जो है वो एक पवित्र स्थान है। So Lord Nityananda appeared there. He was born in the son of Harai Pandit and his mother was Padmavati. Harai Pandit and Padmavati were deeply attached to their son, Nitai. Nitai was their eldest son. And so the mother and father had very deep attachment and deep affection for him. They wouldn't let him go anywhere on his own. They were always with him. They always wanted to see him. They didn't want him to go anywhere without them. तो उनके पिताजी का नाम हराई पंडित और माताजी का नाम पद्मावती, और वो दोनों ही माता पिता उनके जो कि बड़े पुत्र थे, ये तो उनसे बहुत ज्यादा उनसे आसक्त थे और कहीं पर भी उनको नहीं जाने देना चाहते थे वो। So Lord Nityananda, as a young boy, who was known as Nitai, he was very much loved by all the people in the Eka Chakra. And Eka Chakra was very opulent when Lord Nityananda was there. Although it's a little village, just growing some rice and taking care of the cows, was very opulent because of the presence of Lord Nityananda. And he grew up as Nitai, and he was loved by all the people. Everyone knew him, and they loved him. एक चक्र में सभी लोग उनको बहुत प्रेम करते थे निताई को, और उनके वहां पर उपस्थिति के कारण पूरा वो
जो जगह था एक चक्र वो बहुत ही ऐश्वर्यवान हो गया था। हालांकि वहां पर गाय और सादा जीवन, केवल लोग कृषि और गाय के ऊपर निर्भर थे, लेकिन फिर भी भगवान नित्यानंद की उपस्थिति के कारण वो पूरा स्थान बहुत ही ऐश्वर्य परिपूर्ण हो गया था। As a young child, Nitai would organize all the children in the village to do dramas, and every day they would enact the pastimes of Lord Krishna and the pastimes of all the different avatars of Krishna. And the people were amazed. They were wondering, how do these children know all this? We don't know all this. How do they know? तो नित्यानंद प्रभु निताई जो है सभी को इकट्ठा करके, सभी वहां के जो बालक थे एक चक्र के, उनके साथ में वो प्रतिदिन भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं के ऊपर ड्रामा किया करते थे, नाटिका करते थे। और गांव के सभी जो बुजुर्ग थे वो देखते थे कि अरे ये तो हमने कभी इनको सिखाया भी नहीं है, कहाँ से जानते हैं ये लोग ये लीलाओं के बारे में। Of course, Lord Nityananda, Nitai, none different from Balaram, he knows all the pastimes of the Lord. And he was arranging the children to enact all of these different leelas. तो निश्चित रूप से जो निताई है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी के ही स्तरित हैं, उनके अवतार हैं, और वो भगवान की सभी लीलाओं से पूर्ण अवगत है। Only problem was mother and father were so attached to Nitai. And so Nitai thought how to get out from this situation. So it was arranged by the will of Providence that a sannyasi came there to Ekachakra. And Harai Pandit, he brought the sannyasi to his home to give him meals. And he told the sannyasi, please tell me whatever I can do to help you for your service. Please don't hesitate to ask me. I will be happy to help you. तो केवल एक ही समस्या जो उनको समझ में आ रही थी नित्यानंद प्रभु को कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत आसक्त हैं और कैसे इस आसक्ति से यहाँ से निकला जाए। तो भगवान की योजना के अनुसार वहां पर एक साधु आए गांव में, और ये उनके माता पिता को उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस साधु की सेवा में उन्होंने प्रस्तुत किया कि आप बताइए कैसे हम आपकी सेवा करें, क्या हम आपको दें कि आप प्रसन्न हो जाएं। So the sannyasi said, yes, I will tell you before I leave. I will tell you how you can serve me. And so the sannyasi stayed there. He took a nice meal at their home, and he took a night's rest there in their home. Next morning, the sannyasi was going to leave. But before he left, he spoke to Hari Pandit, and he told him, he said, you know, I'm a sannyasi, and I'm alone, and I'm going to visit all the holy places. तो वो सन्यासी साधु जो था उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको जाने के पहले बताऊंगा कि मैं कैसे आप मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। उन्होंने वहां पर उनको फिर अच्छा भोजन प्रसादम ग्रहण कराया, वो रुके वहां पर, विश्राम किए, और प्रातः काल जब वो जाने लगे तब हराई पंडित को बुला करके उन्होंने बोला कि देखिए मैं सन्यासी हूँ और मैं अकेले रहता हूँ, पढ़ करता हूँ, तो मुझे आपके बालक की आवश्यकता है। So as a sannyasi, you know, sometimes I have to cook for myself. Sometimes nobody is there to invite me to their home to take food, so I may have to cook for myself. So it's a lot of trouble for me to, you know, get the wood and get the baked vegetables and cook everything. He said, but if I had some assistant with me, it would be a great help. So he said, you have a nice son, 12 years old, Nitai. I think your son would make a very nice assistant. Kindly let your son come with me, and I will take him to all the holy places with me, and I will guard him with my life. I will keep him safe. तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं अकेले भ्रमण करता हूँ और अकेले खुद स्वयं अपना प्रसादम बनाता हूँ, मैं वृद्ध हो चुका हूँ और इसमें बहुत कठिनाई होती है। इसमें अगर किसी की सहायता मिल जाए तो बहुत लाभ होगा। और चूंकि आपका जो बालक है 12 वर्ष का मेधावी बालक निताई, अगर आप मुझे मुझे मेरे साथ भेज देंगे तो मुझे बड़ी सहायता मिल जाएगी, और साथ ही साथ में उनको मैं बहुत तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराऊंगा। So 500 years ago, everybody, they were just walking. Everything was walking. There was no trains or planes or nothing. So that if he was going to go, if Nitai goes with that sannyasi, he's going to leave home for many years. It will be many years before he will come home again. So father was, you know, he was shocked. He thought, how can I ever live without my son? तो उस समय चूंकि सब लोग पद यात्रा करते थे, उसमें कोई ऐसा और साधन नहीं था,
और यात्रा करते करते बहुत समय लग जाया करता था। तो उनके पिता माता को लगा कि अब ये जाएंगे इनके साथ में अगर भ्रमण पे तो बहुत लंबे समय के पश्चात शायद वापस आ पाए। तो लगा कि इनके बिना कैसे हम रह पाएंगे। But he also thought, I've given my word to help this sannyasi. He's asking me for my son. If I don't give him, then I will be ruined. My word will have no more meaning anymore. It will be very bad for me. और साथ साथ ये भी सोच रहे थे हड़ाई पंडित कि नहीं, मैंने उनको अपना वचन दे दिया है और अगर मैं वचन का अपना पालन नहीं करता हूँ तो सन्यासी की सेवा नहीं करने के अपराध से मेरा सब कुछ नाश हो जाएगा और मेरे वचन का फिर क्या मूल्य रह जाएगा। So he spoke to his wife and he told his wife the situation and he asked his wife, what should we do? And his wife said, well, whatever you decide, I will accept. So the father came back and told the sannyasi, all right, you take my son will go with you. और तब हड़ाई पंडित अंदर आए, अपनी पत्नी से पद्मावती से पूछे कि क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपकी जो आज्ञा होगी, आपका जो निर्णय होगा, मैं उसमें सहमत हूँ, आप निर्णय लीजिए। तो फिर वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो आप मेरे बालों को लेके जाइए। So in this way, Lord Nityananda got freed from his home and he could go with the sannyasi and he traveled to all the holy places. Earlier, in his previous incarnation as Lord Balaram, he'd already visited all the holy places because Lord Balaram didn't take part in the battle of Kurukshetra. At that time, he went to travel and visited all the holy places. So Lord Nityananda, he was eager to go to the holy places again and see these places. और तब जो है इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का जो वो समस्या थी कि घर की आसक्ति वो छूट गई और फिर साथ में चले गए वो भ्रमण करने के लिए सभी स्थानों पर उनके साथ सन्यासी के साथ में। पहले वाले अवतार में बलराम जी के रूप में भी उन्होंने सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया था क्योंकि वो युद्ध में भाग नहीं लिए थे और उस समय वो सभी तीर्थों के पटन पे गए थे। और इस बार पुनः नित्यानंद प्रभु जो है वो तीर्थ जाने के लिए वो उत्सुक हैं। So he traveled all over Bharatvarsh, north, south, east, west, everywhere. And then after many years of traveling, he came to stay in Vrindavan. While he was in Vrindavan, he heard how the Sankirtan movement had begun by Chaitanya Mahaprabhu. और इस प्रकार उन साधु के साथ में वो दक्षिण और उत्तर भारत की सब यात्रा करने के पश्चात अंततः वो वृंदावन धाम में पहुंचे और वहां पर वो उन्होंने श्रवण किया कि किस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु का है वो अब प्रसारित होने वाला है। So that time Lord Nityananda, he came over to Mayapur and he stayed in the home of a devotee. And Lord Chaitanya, he was telling the devotees in Mayapur, he was telling them, he said, you know, a few days ago I had a dream that there was a great personality, a very tall personality, very strongly built, very handsome, very auspicious bodily features. And he appeared in my dream and he said, he's my brother. And he said, he's coming here to Mayapur to be with me. And he wants to take part in our Sankirtan. और तब नित्यानंद प्रभु वृंदावन से मायापुर की ओर प्रस्थान किए, वहां पर जाकर के वो वहां पर एक जगह पे अपने आप को छिपा लिए और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वो उन्होंने अपने पार्षदों के साथ में व्यक्त किया कि उन्होंने स्वप्न देखा था कि स्वप्न में एक बहुत सुंदर आकर्षक बड़े ही हिष्ट पुष्ट काया वाले एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि वो उनके बड़े भाई हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैं आ गया हूं और आपके संकीर्तन आंदोलन में भाग लूंगा मैं। Lord Chaitanya told the devotees, he said, now that great personality, he's come here to Mayapur. You have to go and find him. So he sent Haridas with Srivas Pandit, Haridas Thakur and Srivas Pandit. The two of them are Mahabhagavat devotees. And he sent them, he said, you go and find this personality and bring him, or we will come, if you find him, tell us where he is, we will come there to meet him. और चैतन्य महाप्रभु कहा कि वो कह रहे हैं वो महान व्यक्तित्व कि मैं आ चुका हूं मायापुर में, तो कृपा करके उन्होंने फिर श्रीवास और
हरिदास ठाकुर, इनको दोनों लोग को उन्होंने भेजा जो महाभागवत भक्त हैं कि आप जाइए और ढूंढिए कि कहाँ पर हैं वो, और नहीं तो आप बताइए कि कहाँ पर हैं तो हम लोग स्वयं वहां पर आएंगे। So Srivas Thakur and Haridas Thakur, they were both searching. They went to every house. They went to all the Brahmins, they went to the Vaishyas, they went to the Sudras, they went everywhere. They looked they even went to the homes of the atheists. They couldn't find this personality anywhere. And they searched for 9 hours. And after 9 hours, they came back and they told Chaitanya Mahaprabhu, we can't find him anywhere. We don't see this person anywhere. और तब श्रीवास ठाकुर और हरदास ठाकुर दोनों लोग वो सभी के घर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यहाँ तक कि जो नास्तिक थे उनके घरों में भी जाकर ढूंढे, और लगभग 9 घंटे के इस अनुसंधान के पश्चात वापस आकर बोले कि नहीं, हमको तो नहीं मिले, हम सभी स्थानों पर ढूंढे लेकिन मुझे नहीं मिले वो। So we can see that the position of Lord Nityananda is very confidential, that even great devotees like Haridas Thakur and Srivas Pandit could not find him. It was Chaitanya Mahaprabhu himself who had to lead the devotees to where this Nitai was. तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है नित्यानंद प्रभु जी की, कि ऐसे महाभागवत जो भक्तगण हैं वो भी उनको ढूंढ नहीं पाया, नहीं पता लगा पाया कि कहाँ पर नित्यानंद प्रभु। So Lord Chaitanya Mahaprabhu told the devotees, you come with me. And so they made a little Sankirtan party and chanting the holy name. They followed Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu led them to the home of Nandan Acharya. And this home is just right next door to our ISKCON center in Mayapur. And Chaitanya Mahaprabhu came over from the Yoga Pith of his home, and they came over there to Nandan Acharya's home, and they walked into the house, and there they could see this wonderful personality, very tall, very graceful, very majestic, and he was sitting chanting the holy name intensely. और तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, अब आप सब मेरे पीछे पीछे कीर्तन करते हुए आइए। और वो कीर्तन करते 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 वो नंदन आचार्य के घर पर पहुंचे, जो अभी मायापुर में जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ का जो मंदिर है उसके बिल्कुल समीप है ये स्थान। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर रुके, यहाँ पर हम अंदर जाएंगे। और नंदन आचार्य जी के जब घर में प्रवेश किए तो वहां पर बहुत सुंदर, आकर्षक और बहुत लंबे काया वाले नित्यानंद प्रभु वहां पर बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहे थे। So Lord Chaitanya and Lord Nityananda, when they met each other, everyone could see that they had known each other. Somehow they had, although they had never met before, they knew each other from their previous incarnation. Because Nitai is Balaram and Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. So Krishna and Balaram are together again in the form of Gora and Nitai. और तब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ऐसे मिले कि जितने लोग वहां पर खड़े थे उस समय जो इस दृश्य को देख रहे थे वो समझ नहीं पाए कि ये तो कभी आपस में पहले मिले नहीं थे, और कैसे इतना प्रेम आकर्षण इनके अंदर में है। क्योंकि बलराम, जो नित्यानंद प्रभु है वो बलराम जी है और चैतन्य महाप्रभु वह स्वयं कृष्ण है। तो इतने प्रेम से फिर उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया। So Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted all the devotees to understand the position of Lord Nityananda. He didn't want them to have any doubt about his actual spiritual position. So he told Srivas Pandit, recite some verse from Bhagavatam describing Lord Krishna in Vrindavan. And Srivas began to recite beautiful verses from the 10th canto describing Lord Krishna in the forest of Vrindavan. और तब चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर खड़े सभी भक्तों से वो चाहते थे कि सभी लोग ये जो नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति है उसको समझें, उनको कोई साधारण व्यक्ति न समझें। इसीलिए उन्होंने श्रीवास ठाकुर से बोला कि आप श्रीमद् भागवतम से भगवान कृष्ण के गुणगान में कोई श्लोक बोलिए।
और तब बहुत सुंदर श्लोक 10वें स्कंद से उन्होंने बोलना शुरू किया। So Srivas Pandit recited a beautiful sloka describing how Lord Krishna dances entering into the forest of Vrindavan and decorates the earth with all of his auspicious footprints, the marks of his lotus feet on the earth of Vrindavan. And at the same time, he's playing on the flute and he's decorated with forest flowers from Vrindavan. So when he's recited this verse, then Lord Nityananda, his mood of bhava, his ecstatic love for Krishna was awakened, and he fell on the ground and he rolled on the ground and shed tears, and there was a flood of water on the floor from his eyes. और तब श्रीवास ठाकुर ने 10वें स्कंद से बहुत सुंदर भगवान कृष्ण के गुणगान में विशेष रूप से किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जब वो रमण करते हैं तो उनके चरण चिन्ह जो है वहां पर जो ब्रज की भूमि पर पड़ते हैं और किस प्रकार से सब भक्त उसको देख करके आनंदित होते हैं, इस प्रकार से गुणगान कर रहे थे वो। और ये सुन करके नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है वो इतने भावाविभोर हो जाते हैं कि वो भूमि पर वो नृत्य करना शुरू करते हैं और भूमि पर गिर करके वो उसमें रोल करते हैं और उनके आंखों से अश्रु की धार बह रही है और पूरा वहां पर जैसे बाढ़ आ गई। So Lord Chaitanya told Srivas Pandit, keep reciting, and Srivas chanted more and more slokas describing the beauty of Krishna, and Lord Nityananda jumped up and danced and jumped up in the air and crashed on the floor like he would break all of his bones. People were all shocked to see the ecstasy as Lord Nityananda chanted the holy name of Krishna and called out to Krishna in great ecstasy and love. और तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप रुकिए मत, श्रीवास को बोला कि आप सुनाते रहिए, अब और श्लोक बोलते रहिए। और वो और श्लोक बोलते जा रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनको श्रवण करके फिर उठते हैं और वो बिल्कुल उछल करके हवा में उछलते हैं बहुत ऊंचाई तक, फिर नीचे आते हैं, नृत्य करते रहते हैं। इस प्रकार से उनका ये अद्भुत रूप सब लोग देख रहे थे वहां पर। So now Lord Nityananda had come to Mayapur, and Lord Chaitanya is very happy. He engages him in the preaching work, and he gave his very famous instruction. He told Lord Nityananda that he should go with Haridas. Chaitanya Bhagavat says, Suno suno Nityananda, suno Haridas, Priti gari gari giya koro e bhiksha, bolo Krishna bhajo Krishna koro Krishna shiksha. Right? This is a very famous verse in the Bhagavatam, in the Chaitanya Bhagavat. The Lord Chaitanya is telling Haridas and Lord Nityananda, go to every door and beg the people to chant the holy name of Krishna and to worship Krishna and read the books about Krishna. तो इस प्रकार से मायापुर में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिलते हैं और उनके मिलन के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उनको प्रचार कार्य में करने के लिए उनको और हरदास ठाकुर को आदेश देते हैं कि आप जाकर के प्रति घर में आप जाइए और प्रति घर में जाकर के उनसे आप भिक्षा मांगिए कि आप कृष्ण का नाम भजो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करो। So Lord Nityananda, he's the supreme personality of servitor Godhead. He wants to teach all of us the mode of being the servant of the Lord. So he does not do things in a small way. So when he was asked to go out and preach, he picked the most fallen, the most sinful, the most degraded people, and he would go to them and he would beg them to chant the holy name. तो जैसे ही आदेश मिला नित्यानंद प्रभु कोई भी जब सेवा करते हैं तो वो बहुत विशाल रूप में करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये जो आदेश है ये सबसे पहले मैं जो सबसे पतित लोग हैं उनको जाकर के मैं ये शिक्षा देना चाहूंगा, उनको मैं प्रचार करना चाहूंगा। Lord Nityananda embodies the compassion of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
We say Lord Chaitanya is the most merciful of all the incarnations of Krishna, and we see that mercy manifested to its fullest extent in Lord Nityananda, how he goes preaching to the most fallen, the most unworthy souls. तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कृपा स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। हम सब कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन अवतार है, लेकिन उनके जो पतित पावन का जो ये कृपा है वो नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही प्रकट होती है। हम देख रहे हैं कि कैसे वो जाकर के जो सबसे पतित हैं उनको जाकर के वो ये कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं, उनको प्रचार कर रहे हैं। Lord Nityananda picked these two very fallen souls named Jagai and Madhai, who were actually from a Brahmana family, but they'd become very degraded. There was no sin they had not committed. They'd done everything sinful. They were the most fallen. Everybody was aware of them. Everybody knew them, and they were so low and so sinful that people would just keep away from them and run away from them and lock the door if they saw them coming. तो नित्यानंद प्रभु ने वहां पर जो सबसे पतित थे, जगाई और मधाई, हालांकि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सारे जो कार्यकलाप थे वो बिल्कुल निकृष्ट स्तर के थे, सारे पापों में युक्त थे वो, और इतने ज्यादा वो पापों में युक्त थे कि जो भी उनका नाम सुनता था वो दूर भागता था, उनको देख करके लोग दूर भागते थे। तो उनके पास नित्यानंद प्रभु जाते हैं। Lord Nityananda, he thought, well, if these two souls can become devotees, then everyone will know the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So let us try and bring these two souls into our Krishna conscious mission. And so Lord Nityananda with Haridas, they went to Jagai and Madhai. And at the first attempt, Jagai and Madhai turned on them and chased them, and they had to run for their lives. तो नित्यानंद प्रभु सोचा कि अगर ये जो सबसे पतित है जगाई मधाई, अगर इनको मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रदान करता हूँ, तब जो उनका ये पतित पावन का जो अवतार है, जो उनका नाम पतित पावन है, वो सर्वविदित होगा और सब लोग समझेंगे कि कितने जो सबसे पतित हैं उनका भी उद्धार कर सकते हैं। और ये सोच करके वो और हरदास ठाकुर वो उनके पास जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने पहली बार प्रयास किया तो जगाई मधाई जो है वो उनको दौड़ाते हैं उनके ऊपर प्रहार करने के लिए, और दोनों लोग को फिर वहां से हट के जाना होता है। So every day Lord Chaitanya would get reports about their preaching, and so they told Lord Chaitanya how they'd approached these two very fallen souls. And Haridas Thakur complained. He said, they were very frightening, fearful people. They said, I'm an old man, I cannot run so fast. I had to run very fast for my life. If they caught me, they would have killed me. He said, Lord Nityananda, he goes preaching to these people. It's giving me a lot of trouble. I don't know if I can keep going with him like this. But Lord Chaitanya encouraged Haridas and said, don't worry. One day you'll be successful. You just please continue, keep preaching. तो चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जितने प्रचार का जो समाचार हुआ करता था वो लेते थे कि कितने कहाँ पर प्रचार कैसे हो रहा है। तो जब उस दिन की रिपोर्ट बताई हरदास ठाकुर जी ने कैसे हम लोग कल गए थे वहां पर, लेकिन फिर हमें भागना पड़ा वहां से, और ये नित्यानंद प्रभु कहीं पर भी लेकर चले जाते हैं, और मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ और इस समय दौड़ना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ये इस बात को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप चैतन्य महाप्रभु की कोई बात नहीं, आप निराश मत हो, एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी प्रचार में। So after a few days they went again to Jagai and Madhai, and then this time one of them hit Lord Nityananda on the head with his wine pot and drew blood from his forehead. And Lord Chaitanya, when he heard, he was furious, and Lord Chaitanya came running there. He was going to kill Jagai and Madhai. But it was only Lord Nityananda who intervened and told Lord Chaitanya Mahaprabhu that, my Lord, in this age you must be merciful. और जब दूसरी बार उनके पास में गया तो फिर से जगाई मधाई ने क्या किया, उनके ऊपर प्रहार किया,
उनके पास जो मटका था उसी मटके से प्रहार किया और नित्यानंद प्रभु के मस्तक से वो रक्त की धार बहने लगी। और जैसे समाचार चैतन्य महाप्रभु के पास में गया, चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट होकर के अपने सुदर्शन चक्र को आह्वान देते हैं और उनका वध करना चाहते थे। तब नित्यानंद प्रभु ने वो बीच में आकर के उन्होंने रोका उनको। उन्होंने कहा कि देखिए, कलयुग में जो आपका अवतार हुआ है वो केवल प्रेम बांटने के लिए हुआ है, हरिनाम देने के लिए हुआ है। So because of the intervention of Lord Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu became merciful, but he told Jagai and Madhai, you have to stop. Now you have to be changed. You have to give up all these sinful habits. And the two of them fell at Lord Chaitanya's feet and they begged their mercy, and they both promised that from now on they would never do anything sinful. And they both became devotees. And you can see they're described in the Chaitanya Charitamrita as being part of the tree of the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. और तब चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं तो केवल नित्यानंद प्रभु के बीच में आने की वजह से ही वो उनको क्षमा करते हैं जगाई मधाई को, लेकिन उससे कहते हैं कि अब आगे से आप कोई पाप नहीं करेंगे और इस संकीर्तन आंदोलन में आप भाग लेंगे। और बाद में वो बहुत शुद्ध भक्त बन जाते हैं और इसलिए उनका नाम चैतन्य चरितामृतम के पन्नों में उनका नाम आता है कि किस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के जो प्रचार की जो शाखा है उस शाखा में एक शाखा जगाई मधाई की भी आती है। So this pastime shows the mercy of Lord Nityananda and the compassion, the wonderful qualities of a devotee. It's described by, in the Vaishnava song, it says, Dinahina yata chilo harinam udarilo tarashakshi jagai madhai. That the holy name can deliver all the fallen souls. And the example are Jagai and Madhai, how they were saved by the mercy of Lord Nityananda, who gave them the holy name. तो इस प्रकार से ये कथा जो है नित्यानंद प्रभु की उनकी कृपा, उनकी करुणा को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से ऐसे जो दीन पतित थे जगाई मधाई उनका उद्धार होता है और इससे को वैष्णव रूप से इसको रचित किया गया है कि तार कि ऐसे दीनहीन लोग को भी उद्धार कर दिया नित्यानंद प्रभु ने। और उसके सबसे बड़े प्रमाण साक्षी कौन है? जगाई और मधाई। So after some time, Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. He had to leave Mayapur as a sannyasi, and he took sannyas over in Katwa, on the other side of the Ganges from Mayapur, at the ashram of Keshava Bharati Maharaj. And Lord Nityananda also went there and attended the sannyasi ceremony. And after the sannyasi ceremony, then Lord Chaitanya wanted immediately to go to Vrindavan. And so devotees there were also going there they were going with Lord Chaitanya Mahaprabhu. They were traveling with him, and they were walking and walking. And after some time, they came to a river. And Lord Chaitanya Mahaprabhu asked, "Is this the Yamuna?" And Lord Nityananda told him, "Yes, this is the Yamuna." But actually, it was the Ganga. तो और उसके कुछ समय के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने फिर संन्यास लिया। वो कटवा में जाकर के वहां पर श्री केशव भारती महाराज के आश्रम में, और वहां पर नित्यानंद प्रभु जी भी थे। और उसके पश्चात वो वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहते थे। तो जाते जाते एक नदी आई, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये यमुना है? चैतन्य महाप्रभु पूछा नित्यानंद प्रभु से, उन्होंने कहा कि हाँ, ये यमुना है, लेकिन जबकि वो वास्तव में गंगा थी। So they were following the Yamuna. What Chaitanya Mahaprabhu thought that was the Yamuna, they were following it. And Chaitanya Mahaprabhu thought, soon we will come to Vrindavan. But what happened was, a boat appeared, and in the boat was Advaita Acharya. So Lord Chaitanya Mahaprabhu was surprised that, how is it Advaita Acharya is here? This is Vrindavan. Why is Advaita Acharya here? तो उसके पश्चात
चैतन्य महाप्रभु यमुना समझ के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन देखा उन्होंने कि अचानक वहां पर एक नाव आई और उस नाव में अद्वैत आचार्य और साथ में कुछ भक्तगण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु समझे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे यमुना में यहाँ पर वृंदावन में इस समय अद्वैत आचार्य यहाँ पर कैसे आ गए। But Advaita Acharya told Chaitanya Mahaprabhu, wherever you are, my Lord, this is Vrindavan. तो अद्वैत आचार्य ने बोला कि महाप्रभु से कि महाप्रभु जहां पर आप उपस्थित हैं वही वृंदावन धाम है। Lord Chaitanya was angry at Lord Nityananda that you tricked me. You told me this was the Yamuna. But Lord Nityananda so told Chaitanya Mahaprabhu, he said, well, you said, you know, the Yamuna joins into the Ganga here, at this side of the Ganga. So this side of the Ganga is the Yamuna, other side of the river is the Ganga. और तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो थोड़े क्रोधित हो गए नित्यानंद प्रभु के ऊपर कि आपने मुझे झूठ बोला कि यमुना है, ये तो गंगा है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हाँ ये गंगा है, लेकिन ये चूंकि ये भाग जो गंगा का है ये यमुना इसमें मिलती है, तो यमुना का ही भाग हो गया, ये उधर की जो भाग है गंगा का वो गंगा है। Lord Nityananda had purposely tricked Chaitanya Mahaprabhu to bring him to Shantipur, to the home of Advaita Acharya, and then they called all the devotees to come from Mayapur to come and see Chaitanya Mahaprabhu. So at that time Mother Sachi also came and she saw her son as a sannyasi. So it was a wonderful meeting. All the devotees came to Shantipur and they had kirtan for many days. And Mother Sachi would cook prasadam for Chaitanya Mahaprabhu every day. और तब इस प्रकार अद्वैत आचार्य जी के विनती पर चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर प्रस्थान किए, जो कि शांतिपुर, और वहां पर फिर सभी भक्त मायापुर से वो लोग भी आ गए, सची माता भी आ गई, और कई दिनों तक वहां पर चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे और सची माता प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बना करके उनको भोग लगा रही थी। So then Lord Chaitanya Mahaprabhu told his mother that, I'm sorry, I took sannyas impulsively. I was a madman. I should give it up and come home with you. But Mother Sachi said, no, no, you've taken sannyas. Now you must keep it. You can't do that. You must keep your sannyas. It will not be good if you give up the sannyas. So, but she told him, don't go to Vrindavan. Just go to Jagannath Puri, because then I will get news of you regularly. But if you go to Vrindavan, I will not get news of you very often. So please, you just go to stay in Jagannath Puri. And Jagannath Puri and Mayapur are like two rooms in one house. So I will get the news regularly. People are coming and going. और तब चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सम्मान पूर्वक अपनी माता सची माता से बोला कि देखिए आप इन दिव्य अवस्था में, लेकिन मैं संन्यास ले लिया, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करिएगा। तो उनकी माता ने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, आपने संन्यास लिया है तो अच्छे से पालन करो संन्यास का। अब वापस उन्होंने बोला कि मैं वापस आके आपकी सेवा करूं, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आप भगवान की सेवा करो, लेकिन आप वृंदावन मत जाइए, आप जगन्नाथपुरी जाइए, क्योंकि जगन्नाथपुरी मायापुर के पास में है, मुझे आपका समाचार मिलता रहेगा। वृंदावन बहुत दूर है तो मुझे आपका समाचार ज्ञात नहीं होगा। So they were going, they all left Shantipur and they walked to Jagannath Puri. And Lord Chaitanya, he'd taken sannyas, so they gave him the danda, they gave him the eka danda, because he'd taken sannyas from Keshava Bharati, who was in the line of Shankaracharya. And so in the line of Shankaracharya, they use eka danda, one rod. And so they gave it to Lord Chaitanya. Lord Chaitanya was carrying it. So at one point on the way, as they're walking to Puri, Lord Chaitanya gave his danda to Lord Nityananda to carry for him. But Lord Nityananda, he broke the danda into three and he threw it away. So then Lord Chaitanya, after some time, he said, where's my danda? What happened to my danda? And then Lord Nityananda had to explain. He said, don't you remember when we were having kirtan, that you jumped up in the air as you were dancing, you jumped up and you landed on the danda and it cracked, it broke into pieces. So I just threw them away.
Hare Krishna. Braj Prakash, Prabhu. यस महाराज, सॉरी महाराज, आई लॉस्ट द कनेक्शन। तो फिर जब वहां से जा रहे थे वापस, तो उनको एक दंड संन्यास था, तो एक दंड लेके जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य जी का जो परंपरा है उसमें संन्यास लिया था। वहां पर एक दंड मिलता है और वो एक दंड लेकर के जा रहे थे। और रास्ते में जब स्थान आया, महाराज, अप टू दिस पोजीशन ओनली, अप टू दिस प्लेस ओनली आई कुड हियर महाराज। Oh, I see. Okay, so Lord Chaitanya wondered, he gave the danda to Lord Nityananda, and Lord Nityananda broke it. So then Lord Chaitanya asked him, where's my danda? After some time, Lord Chaitanya wondered what had happened to his danda. He didn't know. And so Lord Nityananda told him, he said, no, he said, when you were dancing, you jumped up in the air and you fell on the danda and smacked, and cracked, and broke into pieces. So I threw them away. तो वो दंड दे करके चैतन्य महाप्रभु जब गए थे स्नान करने के लिए, जब आए, देखा कि नित्यानंद प्रभु ने उस दंड को 3 भाग में तोड़ करके वहां पर रख दिया है, फेंक दिया वहां पर। तो उन्हें पूछा कि दंड कहाँ गया, मेरा दंड कैसे टूट गया ये? तो उन्होंने कहा कि जब आप गए थे स्नान करने तो आप बहुत भाव में आकर के आप नृत्य कर रहे थे और आप कूद रहे थे। भगवान चैतन्य, और जब आप कूद रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु आपके चरण कमल जो है उस दंड पर पड़े और वो दंड जो है वो 3 भागों में टूट गया। So this pastime of the breaking of the danda is significant because it shows us that Lord Nityananda did not consider Chaitanya Mahaprabhu to require a danda, because Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord. So he doesn't have to follow these rules and regulations, and he doesn't belong to any particular ashram or varna. So Lord Nityananda understood this, and that's why he broke the danda and threw it away. That's one understanding. But another understanding is that he'd been given an ekadanda, and Chaitanya Mahaprabhu is not a Mayavadi. He's not in the line of Sankaracharya. Although he took the initiation in that line, he's actually a Vaishnava, and the Vaishnavas carry the Tridandi. The Vaishnavas are known as Tridandi sannyasis. So when Nityananda broke the danda into 3, he was showing also that Chaitanya Mahaprabhu is not an Ekadandi sannyasi, but he's a Tridandi sannyasi. 2 different explanations of the pastime. तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये लीला है और उसके 2 व्याख्याएं दी गई आचार्यों के द्वारा। एक व्याख्या ये है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार, स्वयं भगवान कृष्ण है, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि उनको किसी भी आश्रम की आवश्यकता नहीं है, उनको संन्यास ग्रहण करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उनके दंडे को उन्होंने तोड़ दिया था। और दूसरा कारण ये बताया गया कि चूंकि ये जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, वो एक दंड सन्यास नहीं लेते, इसलिए उसको 3 भागों में विभाजित किया कि जिससे कि वो त्रिदंडी अर्थात वो वैष्णव संप्रदाय में सन्यास लिया उन्होंने। Lord Nityananda plays an important role in the description of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. 2 books which are very prominent in describing the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. One is Chaitanya Bhagavat and the other is Chaitanya Charitamrita. And Lord Nityananda was involved in both of these books. चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु जी की बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके बारे में 2 शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। एक तो श्री चैतन्य भागवत में और श्री चैतन्य चरितामृत में, दोनों ही शास्त्रों में बहुत विस्तार रूप में इनके बारे में वर्णन दिया गया है। Just as Srila Vyasadeva described the pastimes of Lord Krishna in the Srimad Bhagavatam, so it said the Vyasadeva of Chaitanya Leela was a devotee called Vrindavandas Thakur, and Vrindavandas Thakur describes himself as the last disciple of Lord Nityananda Prabhu. जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्री व्यासदेव जी ने किया है, उसी प्रकार श्री चैतन्य लीला के व्यासदेव श्री वृंदावनदास ठाकुर हैं, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है और उनको नित्यानंद प्रभु जी का
उनके आखिरी शिष्य के रूप में उनको जानते हैं। The Chaitanya Charitamrita describes Krishnadas Kaviraj, how he was initially he was staying with his brother in their home. And he said in their home, there was always Sankirtan going on. Day and night, there was always Kirtan. And it happened that one time, a great devotee of Lord Nityananda came to their home. That devotee was Miniketana Ramdas. And he was in the mood of a cowherd boy. He would carry a flute with him and play the flute. And when people would bow down to him, he would climb on their back. And sometimes he would mildly smack their faces. He was a very playful person. तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृतम के जो रचयिता हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके बारे में बताया गया कि उनके अपने घर में अच्छे से सेवा होती थी भगवान की। और एक बार उनके घर में जब एक जो मिनिकेतन राम एक भक्त हैं वो आते थे, वो नित्यानंद प्रभु के बहुत ही बड़े चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे। वो वहां पर आते थे, वो ग्वाल बाल के रूप जैसे थे, बांसुरी बजाते थे, और जब लोग झुकते थे तो उनके पीछे या तो बैठ जाया करते थे या हास्य प्रयास करते थे। So Miniketana Ramdas was he was a very intimate follower of Lord Nityananda. But the problem was, the brother of Krishnadas Kaviraj, he had full faith in Lord Chaitanya Mahaprabhu, but he only had a glimmer of faith in Lord Nityananda. So he did not respect this Miniketana Ramdas. And when Miniketana Ramdas came there, he saw the brother was not respectful to him. And he described him, he said, this is the second Romaharshan. तो मिनिकेतन रामदास जो थे वो नित्यानंद प्रभु के ही बहुत बड़े अनुयायी थे। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई थे, उनको चैतन्य महाप्रभु में बड़ी उनको अंदर प्रगाढ़ उनके प्रति सम्मान था, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं था। तो ये देख करके वो कहते थे कि ये तो दूसरा रोमहर्षण है। So sometimes people, they could see Lord Chaitanya very renounced as a sannyasi. They thought, oh yes, he's very good. But they saw Lord Nityananda. Lord Nityananda is an unusual personality, and he's avadut. He does not belong to any of the ashrams. And eventually he also married. He married the two sisters who were both daughters of Suridas Pandit. Suridas Pandit was the brother of Gauridas Pandit, who was a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. But the two wives of Lord Nityananda, it said they were previously the two wives of Lord Balaram. In Lord Balaram's Lila, Lord Balaram also had two wives. He had Varuni and Revati. So these two wives of Lord Balaram, they came as two sisters in Chaitanya Lila as Janava and Vasudha. And they both became wives of Lord Nityananda. तो कई बार लोग चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं कि हाँ वो तो सन्यासी हैं और वो परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ पाते कि कैसे वो अवधूत के रूप में रहते हैं। और भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने विवाह भी किया है, गृहस्थ हैं वो, उनकी दो पत्नियां हैं, जो कि सौरीदास पंडित की दो कन्याएं हैं, जो कि गौरीदास पंडित के भाई हैं। और ये बलराम जी की जो पहले बलराम जी के रूप में जब बलराम जी आए थे तो उनकी जो दो पत्नियां थी वरुणी और रेवती, वही दो बहन के रूप में यहाँ पर आकर के दो कन्याओं के रूप में यहाँ पर इनकी अर्धांगिनी बनती हैं, जिनका नाम जानवा और वसुधा है। So as we said, the brother, he had full faith in Chaitanya, but only a glimmer of faith in Lord Nityananda. And Krishnadas Kaviraj told him, he said, that's like a hypocrite. He said, it's better to be an atheist and reject both the brothers than to accept one and believe and not accept the other. He said, that's a hypocrite. Better to be an atheist and just reject everybody. And then he also told him, he said, to accept one brother and not the other, it's like the half-hen philosophy. You have the hen, the front part eats the food and the back part lays the eggs.
You just want to keep the back part of the hand. You don't want to keep the front part, so you cut off the front part and you don't keep the back part. That's it. That's your logic. You want to have Chaitanya Mahaprabhu, you don't want Lord Nityananda. He said, can you worship Lord Krishna and reject Lord Shiva? You cannot. You have to accept Lord Shiva. He's the greatest Vaishnava. If you reject the devotees of the Lord, then how can you worship the Lord? And so he was, but the brother, he was not convinced. He wouldn't accept Lord Nityananda. तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भ्राता को बोलते हैं कि कैसे आप एक भाई को आप सम्मान कर रहे हो और दूसरे भाई को नहीं मान रहे हो, तो ये आप तो मिथ्याचारी हैं फिर, और मिथ्याचारी से अच्छा होना है कि आप नास्तिक हो जाओ, वो अच्छा है कि आप किसी को मत मानो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को मानना और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानना, तो ये तो अर्ध कुकुट न्याय है। अर्थात जैसे कोई किसी के पास मुर्गी हो तो मुर्गी मुख से खाती है और पीछे से अंडे देती है, तो वो पीछे का भाग रखना चाहते हैं और आधा भाग को काट देते हैं कि मुख से खाती है, वो बड़ा खर्चीला भाग है, तो इसको अर्ध कुकुट न्याय कहा जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से बोले ये आपका न्याय ठीक नहीं है, ये लॉजिक ठीक नहीं है। लेकिन बाद में देखा उन्होंने कि वो जो है नहीं मानते हैं, और वो इनकी बात को सुन करके भी वो इस पर वो उनका विश्वास नहीं होता है कि मुझे दोनों का सम्मान करना है। So ultimately, Miniketana Ramdas understood he was not welcome there. And so he broke his flute and he left the house. He just went and left. And Krishnadas Kaviraj told his brother, he said, this is very bad. This is very inauspicious. You've offended a great devotee. This will not be good for you. So that night, Krishnadas Kaviraj took rest, and in his dream, Lord Nityananda appeared to him. And Lord Nityananda came there in his dream, along with all the associates, and they were chanting the holy name, dancing. And Lord Nityananda came and he instructed Krishnadas Kaviraj. He told him, he said, you go out from this house. Don't stay here. Better you go to Vrindavan and get the shelter of Rupa and Sanatan in Vrindavan. और तब फिर मिनिकेतन दास जो थे उन्होंने अपनी बांसुरी वहां पर तोड़ दी और बड़े क्रोधित होकर वहां से चले गए। तो ये अपमान दे करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई को बोला कि आपने ठीक नहीं किया, ये बड़ा ही अशुभ घटना घटी है। और फिर जा करके वो सो गए और रात्रि में उनको स्वप्न आया। उस स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आकर के उनको आदेश देते हैं कि अब आप इस घर में बिल्कुल मत रुको, अब यहाँ से आप जाओ वृंदावन की ओर, और वृंदावन में जाकर के श्री रूप और सनातन गोस्वामी की शरण ग्रहण करो। So, without waiting for even the sun to rise that morning, Krishnadas Kaviraj just left the house and he went to Vrindavan, and he got the shelter of Rupa and Sanatan and Raghunath, and he stayed there in Vrindavan, and then he wrote Chaitanya Charitamrita because he heard all Chaitanya Leela from them. So after hearing all Chaitanya's Leela from these great Goswamis, he was able to compile the most wonderful literature, which is a jewel in the classics of Bengali literature, called the Chaitanya Charitamrita. और तब उस सुबह की प्रतीक्षा नहीं करते हुए प्रातः काल की रात्रि में ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पर जाकर के रूप और रघुनाथ गोस्वामी के आश्रय में उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और चैतन्य चरितामृतम जो उनसे श्रवण किया था वो बहुत सुंदर रूप से चैतन्य लीला का वर्णन करते हैं। बड़े ही महान ग्रंथ की रचना करते हैं जिसको हम श्री चैतन्य चरितामृतम के नाम से जानते हैं, जो बंगाली भाषा में या बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे गौड़ी वैष्णव में बड़े प्रसिद्ध है। So Lord Nityananda, he was usually living in the home of Srivas Pandit, because Chaitanya's pastimes, every night he was coming there for kirtan, and Lord Chaitanya's many lila were there in the home of Srivas Pandit. Lord Nityananda, he liked to stay at the home of Srivas Pandit. Srivas Pandit and his wife were like his mother and father, and they treated Lord Nityananda just like their son. So he enjoyed there. But his behavior, Lord Nityananda, is sometimes very unusual. He's very unusual personality. And
Lord Chaitanya, therefore one day he asked Srivas, he said, you know, Srivas, you're a very respectable person. You're the head of the Brahmin community. He said, is it good for you to keep this Nityananda in your home? Do you think it's okay? Won't people be doubtful about you having this person stay in your home? तो नित्यानंद प्रभु जो है वहां पर श्रीवास ठाकुर के घर में जाया करते थे, वहीं पर रहा करते थे और वो उनको बिल्कुल अपने पुत्र के समान मानते थे, उनको बहुत स्नेह दिया करते थे, वहीं पर कीर्तन किया करते थे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वहां पर भाग लिया करते थे। तो एक बार उनसे पूछा गया कि क्या आपको कोई आपत्ति नहीं है, ये व्यक्ति जो बिल्कुल अवधूत के जैसे हैं आपके घर में रहते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं है? So Lord Srivas Pandit told Lord Chaitanya, he said, oh my Lord, you are testing me. He said, I can never give up the lotus feet of Lord Nityananda, even if he will marry a Muslim girl. And even if I see him coming from the liquor shop, he said, I will never give up the lotus feet of Lord Nityananda. So Chaitanya Mahaprabhu was so pleased with Srivas Pandit that he had so much faith in Lord Nityananda that he blessed Srivas Pandit. He said that even if the goddess of fortune has to go begging, your home will never know any poverty. तो श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं, आप मेरा परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कभी भी प्रभु के चरण कमल को नहीं छोड़ूंगा। अगर वो किसी मुस्लिम कन्या से विवाह करके भी आ जाए या अगर वो मदिरालय से भी आ जाए और उनको आशीर्वाद दिया कि अगर कभी लक्ष्मी को भी जाकर भिक्षा मांगनी पड़े, लेकिन आपके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी। So Lord Nityananda, he would take every year the devotees, he'd bring them from Mayapur. They would go together, a big group of devotees. Actually, the person in charge of the party was a devotee called Shivananda Sen. And Lord Nityananda would go with them. They would go every year to see Lord Chaitanya Mahaprabhu, and they would attend the Rath Yatra, and they would have the association of Chaitanya Mahaprabhu for some time. And so they had to go over many rivers. They had to cross different rivers, and they had to go across through different tolls. They had to show papers and pay taxes. It was not such an easy thing. So one particular time, there was a delay, and the devotees were waiting. Shivananda Sen had to talk to the officials, and Lord Nityananda and all the devotees were delayed. They were waiting and waiting, and the sun was very hot. They had no shelter, and they had no food. So they were waiting and waiting. Lord Nityananda got a bit angry, and at one point he cursed. He said, where is the Shivananda Sen? Why is taking so long? And then Lord Nityananda, he said, I curse the son of Shivananda Sen to die. So when Lord Nityananda said that, then the wife of Shivananda Sen, who was there, she began to cry because she didn't want her son to die. तो प्रतिवर्ष वहां से नित्यानंद प्रभु जो है सभी भक्तों को लेकर बंगाल से वो जगन्नाथपुरी जाते थे चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, और 3-4 महीने वहां पर थे। और ये सारी व्यवस्था शिवानंद सेन नामक एक जो भक्त थे, और वो बड़े व्यापारी थे, उनके पास काफी धन था, तो वही ये सारी व्यवस्था करते थे, उनके रहने की, आने जाने की और सब प्रसादम की सारी व्यवस्था। तो एक बार जाने लगे तो उनको जाते हुए कई नदियों को पार करना पड़ता था, और हर नदियों पर उनको जो है वो कुछ कर देना पड़ता था पार करने के लिए, नाव से जाने के लिए। तो एक बार कहीं पर उनको काफी विलंब हो गया वहां पर वो कर देते हुए, और बड़ी धूप थी और कोई जल की व्यवस्था नहीं थी, और तो उस समय वहां पर नित्यानंद प्रभु के साथ में थे, वो पूरे समूह के साथ में। तो वो बड़े क्रोधित हो गए, वो अवधूत थे, इस प्रकार का व्यवहार करते थे अपने नित्य संगियों के साथ में, और क्रोधित होकर के उन्होंने उनको श्राप दिया कि कहाँ है शिवानंद,
श्राप देता हूं कि उनके पुत्र की मृत्यु हो जाए। और वहीं पर उनकी पत्नी खड़ी थी, वो सुन रही थी और वो बहुत विलाप करने लगी कि ऐसा कैसे श्राप दे दिया नित्यानंद प्रभु जी ने। So finally, when Shivananda Saint came and he saw his wife crying, he said, "Why are you crying?" And she told him that Lord Nityananda cursed our son to die. And Shivananda Saint said, "Well, if Lord Nityananda tells her son to die, let him die. Why are you crying? We shouldn't cry." And so then Lord Nityananda came and he kicked Shivananda Saint, gave him a cake. He said, "Because of you, we're out here in this hot sun." And Shivananda Saint, being kicked by Lord Nityananda, he said, "Oh, I'm so fortunate. I've been touched by the dust of your lotus feet. This is the greatest blessing for me." He said, "The dust of your lotus feet are definitely purifying me." So we can just understand the faith and the love and the devotion which all these devotees had for Lord Nityananda. और तब जब शिवानंद सेन वहां पर आया तो उन्होंने सुना, उनकी पत्नी ने बताया कि वो देखा कि उनकी पत्नी रो रही थी, विलाप कर रही थी। मैं पूछा क्या बात है, बताया उन्होंने कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसे श्राप दिया है। तो बोला कि नित्यानंद प्रभु ने कहा है तो ठीक है, पुत्र को मरने दो, अगर उनकी इच्छा है तो मेरे पुत्र को मरने दो। और तब तक फिर वहां पर नित्यानंद प्रभु जी आ गए और अपने चरण कमलों से प्रहार किया उनके ऊपर, शिवानंद सेन के ऊपर, कि तुम कैसी व्यवस्था की हो, यहाँ पर इतना देर तक हमको खड़ा रहना पड़ रहा है। और जैसे ही प्रहार किया तो वो शिवानंद सेन जो है बड़े प्रसन्न हो गए। वो कहने लगे कि नित्यानंद प्रभु, आपके चरण कमलों के रज का स्पर्श पाने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती लोगों को, और आपने मुझे बड़े सहज से ये अपने चरण कमलों का रज मुझे प्रदान कर दिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके चरण कमलों के प्रति हम देख रहे हैं भक्तों की श्रद्धा जो वहां पर है मायापुर में, कितनी श्रद्धा है उनके चरण कमलों के प्रति। I'll just tell one more pastime because I know it's late. I don't want to take too much of your time, but there's so many pastimes, but this one pastime very instructive, and that's concerned with Panihati, the Panihati Shiradahi festival, which was arranged by Lord Nityananda, because Raghunath came there. And when Raghunath came to Panihati, and Lord Nityananda had come there with all his devotees, Lord Nityananda told Raghunath that I'm going to punish you. You put on a festival. I want a feast for all the devotees, everyone. And so Raghunath organized the Shiradahi festival. तो महाराज कह रहे कि एक मैं और कथा बताऊंगा। मैं जानता हूं कि वहां पर विलंब हो रहा है, लेकिन हम सबका सौभाग्य कि महाराज अपना इतना समय दे रहे हैं हम सबको। तो ये चूड़ा दही उत्सव का जो कथा है पानीहटी, बहुत ही ये निर्देश देने वाली कथा है। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहां पर आए थे तो उनके ऊपर उन्होंने कहा था कि आपने जो है जितने लोग यहाँ पर हैं सबके लिए आप चूड़ा दही की व्यवस्था करो। Now, Raghunath wanted to become a full-time devotee. He wanted to leave his home and join Chaitanya Mahaprabhu. And he came to Lord Chaitanya. He had come earlier to Lord Chaitanya Mahaprabhu and asked him that, can I just leave home and come with you and join you? But Chaitanya Mahaprabhu sent him home and said, no, just stay at home. Just be a normal person for now. You know, don't rush it. Take it easy. Go home and just stay there and keep Krishna in your heart. Remember Krishna. But when Lord Raghunath came to Panihati, and he organized the Panihati Shiradahi festival, then Lord Nityananda was very pleased with him. And he blessed him that very soon you'll get relief from the well of materialistic life. तो रघुनाथ दास गोस्वामी पहले भी चंद्र महाप्रभु के पास जाना चाहते थे और पूर्ण रूप से वो अपनी सेवा देना चाहते थे घर छोड़ करके, लेकिन चंद्र महाप्रभु को बोला था कि नहीं, अभी आप घर पे जाइए और जब सही समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको बुलाऊंगा। और अब इस समय वो, चूंकि उस समय नित्यानंद प्रभु कृपा उनको प्राप्त नहीं थी, और अब वो नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त करके नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि कृपा करके आप पहले इन सभी भक्तों की सेवा करो और तब जाकर के आप चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर पाओगे, अर्थात इस अंधकूप जो घर का अंधकूप है उससे आप निकल पाएंगे। And so it happened a short time later, after the blessings of Lord Nityananda,
Raghunath was able to escape from home, and he went to Jagannath Puri, and he became the devotee, the disciple of Lord Chaitanya, and he stayed in Jagannath Puri so long as Lord Chaitanya was present. And after Lord Chaitanya finished his pastimes, then Raghunath went to Vrindavan, and he stayed in Vrindavan with Rupa and Sanatan. But this pastime shows us that you have to get the blessing of the spiritual master. You don't go directly to Krishna. That first you get the blessings of the spiritual master. By the blessing of the spiritual master, then you get the blessings of Krishna. So that was the message which we learned from the Leela of Raghunath, because he tried to go directly to Lord Chaitanya. But Lord Chaitanya told him, go home, be a normal person. But after he got the blessings of Lord Nityananda, Lord Nityananda is the original guru, then he was able to get free of material life. तो महाराज बता रहे हैं कि इस प्रकार से इस लीला में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि क्या हुआ। इसके पश्चात तुरंत रघुनाथ गोस्वामी को जो है फिर चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त होता है। वो घर के आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, जो घर का उनको बंधन था उससे मुक्त होकर के जगन्नाथपुरी में जाकर के महाप्रभु की सेवा करते हैं, उनके नित्य पार्षद बनकर के वहां पर। और महाप्रभु के इस राधाम से जाने के पश्चात वृंदावन धाम में आते हैं और रूप रघुनाथ जी के शरण में वहां पर सेवा करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के पहले हमें आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त करनी होती है। बिना उनकी कृपा के भगवान की कृपा संभव नहीं है। और यही इस लीला में दिखाया गया यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला में कि वो पहले बहुत प्रयास किए भगवान के पास जाने के लिए, लेकिन जब तक उनको नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त नहीं हुई तब तक उनको भगवान के पास जाने का ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ। So important for us to get the mercy of Lord Nityananda. By the mercy of Lord Nityananda, then we get the mercy of Lord Chaitanya, and then we can understand Radha and Krishna. And how to get the mercy of Lord Nityananda? We should take up preaching. We should distribute the books and teach people about Krishna, just as Lord Nityananda was doing. Go to the fallen souls like Jagai and Madhai and engage them. Try to preach to them in Krishna consciousness. तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी, और तब जाकर के हमको राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त हो पाएगी। और कैसे हम सब कृपा प्राप्त कर सकते हैं? श्री नित्यानंद प्रभु जी की प्रचार कार्य में युक्त होकर के, भक्तों की सेवा करके, जैसे उन्होंने स्वयं किया। जितने पतित लोग हैं उनके पास जाकर के उनको कृष्ण भावनामृत का संदेश देना, और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे और तब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे, और तब हमको श्री राधा और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो पाएगी। Sri Nityananda Prabhu ki, जय Prabhupada ki. Okay. Thank you so much, Maharaj. Okay, Prabhu. Thank you, Prabhu. I'm sorry it took a lot of time. I hope it's not too late for people. No, Maharaj, definitely it's late for you, Maharaj, but we were so blessed, Maharaj, so fortunate that we got so much of your association, which is very, very divine. And such a... Hare Krishna. Maharaj, talent for you, Maharaj. Oh, now we are wonderful. Jasmine flowers, beautiful. Oh, so please thank accept you. my Wonderful. Maharaj for your association, your time, Maharaj, and your association, Maharaj, is so divine, so purifying, Maharaj. And the entire pastime of Lord Nityananda Prabhu, so nicely you explained, Maharaj, from the Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita, and so many wonderful instructive pastime you got, Maharaj. We are very, very blessed, very grateful to you, Maharaj, and we look forward, Maharaj, in Kanhaiya time permits, Maharaj, and the situation becomes all right. So we are waiting, Maharaj, here, eagerly waiting to serve you. Thank you, Prabhu. Thank you very much. I'm also hoping someday that maybe we can come there. So, Maharaj, can I give you a small introduction to the both? Hare Krishna. Okay, Prabhu, thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. Hi. So all together we'll chanting Hare Krishna Mahamad and Vaishnava Pranam mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री Jai. की जय। So Maharaj, now we are here at Salmia only, at Shyam Sundari Mataji place, and few devotees have gathered here, Maharaj. Due to lockdown, we could not gather in the big hall, but we are gathered in a few numbers, and this is a wonderful here, Maharaj, and we are going to do Abhishekam now of Shri Gaur Nitai. So, Wonderful. a few devotees, they have brought their worshipable Gaur Nitai deities here. So we'll be doing for 2 or 3 deities, Maharaj. And so all of us, we are seeking your blessing, Maharaj. Oh, definitely. You're all blessed. You're so fortunate. You're all together there. Very nice. Nice to see so many of you together. Thank you so much, Maharaj, for your association, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much for giving me the opportunity. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. His Holiness Bhakti Narasima Swami Maharaj ki jai. Shri Prabhupada ki jai. तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और अभी जहाँ जहाँ पर आप लोग अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, भगवान का अभिषेकम और उसके बाद दिव्य प्रसादम, भगवान का गुणगान करते हुए आप सब प्राप्त करिए। जहाँ जहाँ पर आपको सुविधा है वहाँ पर आप कर सकते हैं। और जैसे महाराज ने बताया बहुत सुंदर रूप से, जो आज का मुख्य संदेश कह लीजिए हम सबके लिए महाराज का जो आदेश था, वो ये कि भगवान की कृपा हमें भक्तों की सेवा से प्राप्त होती है, और नित्यानंद प्रभु कृपा के लिए हम सबको इस दिव्य अभियान में प्रचार कार्य में होना पड़ेगा। और यही नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करता है, और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, और तब जाकर के हम सबको अवसर प्राप्त होता है युगल